Weekly Times. Be with the times. छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज का दिन ये इंटरव्यू नहीं होने जा रही है, इट्स गोना बी एन एब्सोल्यूट फन। रास मीडिया ने इनवाइट किए थे 3 स्टैंड अप कॉमेडी आर्टिस्ट। जी हाँ, मनीष त्यागी, गौरव गुप्ता एंड महीप सिंह। वेलकम टू सिडनी सर्स। Thank you. Thank you. Thank you. How has Sydney been treating you so far? I think it's been 3 days. Absolutely awesome. Absolutely awesome. Yeah. Yeah, it's been Nice. a lovely experience. We've seen a bit of Sydney, the harbour, Sydney harbour, and went to some beaches along with the guys, and it's beautiful. You got a beautiful city here, so we are having fun. गौरव जी, ईस्ट दिल्ली से सिडनी। He days Sydney को सारे ड्रेसेस शादरा लक्ष्मी नगर सडनली तो हम लोग वही मैं और महीप जी यही बात कर रहे थे वहाँ पर and you know when we were on ferry we met a woman 65-year-old woman and she was so full of life and she was so happy. कोई भी प्रॉब्लम यहाँ 65 साल की आंटी से बात कर लो आप इंडिया में तो ऐसा लगेगा आपके 5 साल चूस गए अंदर से जिंदगी में से आपके ख़त्म हो गए तो इट वाज ड्रास्टिक चेंज। मैंने कहा क्या यार वहाँ उनको ऐसा लगा कि हम इनसे कुछ सीख सकते। शी वाज वेयरिंग हैट गॉगल्स फेसबुक उन्होंने टैग भी कर दिया एंड शुक्रगुजार हूँ मैं गुरु। मैंने बोला था आज इंटरव्यू नहीं होने वाली, इट्स गोना बी फन। शुक्रगुजार हूँ मैं गुरुदत्त शेनॉय और विजय गंबर जी का, जिनकी वजह से आज मुझे मौका मिला है इन 3 महारथियों के साथ बैठने के लिए। और उसके बाद रीना जेठी जी, कुबेर वॉल्ट्स। Look at the wonderful set. Thank you, Reena ji. Thank you once again. कहते भी there is no institute for stand-up comedy और आप तीनों लोग महारथी उस फील्ड में। ये आइडिया वैसे कब और कैसे आया? आपसे शुरू करता हूँ। अपने घरों से। Yeah, because हमारे घरों में कॉमेडी होती है ना। I mean, it's a way of looking at life, and I think, yeah. So I think personally, I feel that what rubs off is आपके जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं और उसको आप यू कैन प्रेजेंट इट विद एक बड़ी अच्छी कहावत है जो मैं महीप भाई से शेयर कर रहा था कि पैसा वहीं बनता है जहाँ दुख होता है। तो चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडियन हो, या बाबा जी हो। तो महीप जी, व्हेन डिड यू स्टार्ट इट? मतलब हाउ कम दिस आइडिया केम बी, ले भाई आज से ये काम शुरू? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि आज से ये काम शुरू, because there was no date set for that. But the only thing is that I had no idea about stand-up comedy 6 years ago, and I think 6 years ago, stand-up comedy in Delhi particularly was in the beginning stage, and nobody knew about stand-up comedy. It's a total art form, completely lift off from West. So to say, Hollywood, and we just saw somebody performing. I just saw somebody performing stand-up comedy, and I thought, okay, this is very easy. It looks very easy. This guy is just holding a mic and just talk to people, and they are laughing. So I thought it's a good idea. I thought I'll give it a go, and somebody gave me a chance in an open mic, and I started telling my own life stories, which are not jokes. But I think that people find it very funny when you fail at something. So all my failures, all my insecurities, everything I talked about on the stage, and people found it very funny. And after like 2 months, I won this Comedy Central's All India Talent Hunt, and life changed after that. So there was no intention. Like I always call myself an unintentional comedian. There was no intention of becoming a comedian. So, and stand-up comedy is like Manish bhai said, that it generates from pain. So you take your painful experiences in your life and you just tell it to people, and people will find it funny. So this was the serious side of a comedian. Yes. आपका सफर कब और कैसे शुरू हुआ? आज से नहीं पूछ रहा हूँ, कब और कैसे शुरू हुआ? मेरे ऐसे बिजली गई हुई थी घर में एमसीपी ऊपर करने का था, एक झटका लगा, देन आई टर्न इनटू कॉमेडी। लोग पूछते हैं हाउ डिड यू टर्न इनटू कॉमेडियन, में क्या बोलूं यार? हाँ, कुछ भी बोलो। ऐसे एमसीपी ऊपर कर रहा था, शॉक लगा, एकदम से उठा तो फिर कॉमेडियन बन गया। अच्छा, अब दोबारा जाके एमसीपी को टच नहीं करना, शॉक लगे और कॉमेडी का ट्रिप होती रहती है। It was like Spider-Man, like got bitten by बता देता हूँ आपको, वो तो जोक्स अपार्ट। एक्चुअली वो I was right from the college. I was into like stage and all.
प्लेज वगैरह करता था, मोनो एक्टिंग करता था. आई एम इनटू मिमिक्री आल्सो. तो वो ये होता है ना ग्रुप में एक हमेशा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, इज वन गाय जो ज़्यादा बोलता है, सबको हंसाता रहता है, इसको तो बुला ही लो यार, इसको तो बुला ही लो. तो आई वाज वन ऑफ दोज काइंड ऑफ गाइस. सो उन्होंने बोला यहाँ में कर रहे तो सच स्टेज पे कुछ कर रहे. बहुत अच्छा. सो अच्छा, इस तरह से तो मतलब कॉलेज के टाइम से शुरू से शौक रहा है. आई वाज लाइक मेरे को स्टेज फियर शुरू से नहीं रहा था, क्योंकि मैं कॉलेज से ही स्टार्ट मैंने कर दिया था. सो बीच में यू नो व्हेन आई वाज ओपनिंग माय क्लिनिक एंड आई वाज सेटलिंग द क्लिनिक, सो दैट फेज लाइक आई स्टॉप्ड फॉर लाइक 5 to 6 years. आई नेवर वेंट ऑन स्टेज. तो 6 years के बाद मैं वापस गया, यू नो, टू गिव अ हैंड एंड टू गिव अ ट्राई एंड स्टैंड अप कॉमेडी. Any difference did you see 6 years before and when you restarted? It was drastic. क्योंकि उस समय तो क्या था, अपना कॉलेज है, अपने बंदे, अपनी फैकल्टी है, कुछ तो हंसी देंगे. एंड नाउ इन स्टैंड अप कॉमेडी यू आर वॉकिंग ऑन द स्टेज एंड यू आर टेलिंग थिंग्स in front of complete strangers. You don't know, they're not your friend, they're not your faculty, this is not your college. So do you feel any pressure when you are there at a new place with a new audience there? Obviously, why not? Every time. It's good. I think it's good. Like It's if good. You should feel If pressure. you stop feeling And- pressured, you will lose respect for the audience. So I was in practice for And 5 your years art also form before Yeah. entering into the stand up comedy. तो वही saliva and blood and painful complaints patient की, और सब यहाँ दर्द हो रहा है, ये चुभ रहा है, ये देखो ठंडा लगता है, गर्म लगता है. इसके बाद suddenly you are telling jokes on stage. तो वो ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन था, तो उसके लिए अडाप्ट करना बड़ा मुश्किल होता. कई बार मैं क्लिनिक के बाद शोज़ पे जाता था, तो मैंने क्लिनिक के हिसाब से कपड़े पहन रखे होते थे, यू नो, शर्ट पैंट प्रॉपर. अच्छा, you go with the काट रखी है प्रॉपर. फिर उसके बाद फटाफट से सब कुछ करके फिर टी शर्ट पहन के क्लब में जाते थे सफेद perform वाली करने. टाइल के साथ. I think going back to your childhood, you know, we all have some memories that we want to relive of the childhood. Manish ji, आपसे शुरू करता हूँ. Serious or the funny ones? Both. No, I mean, because Let's talk about any of the memory that you want to relive. No, I mean, there are, you know, it's a Number difficult of question, memories. It's a difficult question, because do you want some event to be, you know, undone? If that is a question, then there's a different answer, because, look, it's so sharing, because this is all my TEDx talks also. I had lost my dad and sister when I was 17 to a car accident. Oh. All right. So if I want something to be undone, I think I would probably want that moment to be undone. Yeah, I mean, that's my goal on the serious note. Yeah. I know, I can understand the pain. That would be. I can absolutely understand the pain. Yeah. ठीक है. Maheep ji, आपसे something funny one. Oh really? Do you want me to be funny about this? Yeah. So if I want to relive anything, I would like to relive my 10th board examinations, so that I can do better, because I know all the questions now. So that Same way school? I'll yeah, not same. No, मतलब but year 10 was same school से? Yeah, same school, same board actually. We used to have like board examinations, and so I know every question now. So I'd like to relive my 10th board examination so that I can score well and be something else other than this. Yeah. What's up? Actually, I wasted 2 years in getting through MBBS. So I dropped for 2 years, but I didn't get through. I finally ended up in doing BDS, Bachelor of Dental Surgery. So मुझे ताना सुनना पड़ता है. You know, BDS itself, like it's beyond a degree. It's a कार्ड ऑफ योर फेलियर. जैसे आप बताओ BDS, अच्छा MBBS में तो हुआ नहीं होगा, सब सीधा बदलता है. अच्छा चलो, उसको एक्नॉलेज नहीं करते. सो बेसिकली वही है. सो आई वुड लाइक टू चेंज दैट मोमेंट व्हेन आई ड्रॉप फॉर 2 years. आई कुड हैव लाइक फॉलोड माई पैशन देयर ओनली when I didn't succeed in MBBS. Maybe, you know, getting into this dentistry, may I have started earlier. So शायद मैं इतना बूढ़ा नहीं होता जितना अभी, तो शायद पहले हो जाता कुछ. I think. जी Maheep जी, तो being a stand-up comedy artist, you know, हाजिर जवाब, spontaneous. How does your family cope up with it? I think they've been coping up with this thing since my childhood, because I used to be like that only. Like I would, it's like exercising your brain. Some people have very strong arms and some people have very strong legs. So if you exercise your brain, you will always look at the funny side of people or situations. So I'll crack jokes even on funerals, and that was very difficult to handle for my family members.
but like I have always been like that, so they have understood now that I will make fun of anything and everything. So they have accepted it, and since now everybody has been talking about this, and we got our pictures in papers and TV interviews like this one, and now they're very happy. Okay, something, कुछ तो किया, मतलब whatever the hell you were doing, it was the right path. So now they are happy. Yes. Gaurav ji, I think Gaurav Gupta comes from a Bania family. Pressure business का, business. So all of a sudden, मेरे एक्चुअली बाकी रिलेटिव्स वो हैं, दो था बिजनेसमैन, बट हम लोग जॉब, मेरे पापा हाँ, में थे. अच्छा. तो आप सोच सकते हो. तो मुझ पे बिजनेस का प्रेशर नहीं था, बट हाँ ये था कि कुछ अच्छी सी नौकरी पकड़ लो. बैंक पीओ बनाने के लिए तैयार थे मेरे पापा मेरे को, जब मेरा MBBS में नहीं होता, कह रहे बैंक पीओ की मैं तैयारी करवा दूंगा तुझको, और तू 6 साल में तू वो बन जाएगा डिप्टी ब्रांच मैनेजर, और 12 साल में तू मैनेजर बन जाएगा. तो कितना अच्छा मुझे दिख ही रहा था हरियाली. तो फिर एंड कोपअप की जो आप बात करें, वो उन्होंने मुझे छोड़ दिया था, यार ये ऐसे ही बोलता रहता है. और माई वाइफ इज़ लाइक ठीक है, अपने जोक सुनाता रहता हूँ मैं, जो भी बोलना होता है, अच्छा ठीक है बाम पास कर दो यार, गोली देना जरा, हाँ ठीक है, वो ग्रीन टी बना दो जरा माइक्रोवेव में. मतलब घर पे सबका एक ही हाल रहता है. हाँ उसको पता ही है, ऐसी है, बोलता रहता है. Yes. If you come off stage and you made people 300, 400 people laugh at a time, and they come up to you and they say that enjoyed a lot, they have never laughed that much in their life. So it makes your day. Like it's not nobody goes to a chartered accountant and say accident, man. Like nobody thanks me. Yeah, nobody thank me कि डॉक्टर साहब क्या दांत निकाला आपने, मैं तो आपको भूल ही नहीं पाया. वो तो कंप्लेंट नहीं करते जा रहे, डॉक्टर साहब मुंह थक गया. Nobody wants to remember the toothache. Like, और मे बी नोबडी एवर टोल्ड कुबेर वॉल्ट्स कि हमने सोना रखा था 1 किलो 2 किलो हो गया 2 दिन में. सॉरी. मुझे आज तक किसी ने थैंक्स नहीं बोला कि सर आपकी वजह से. मेरे को किसी बूढ़े बाबा ने ये नहीं बोला कि सर आपने डेंचर मुझे दे दिया, मैं मूंगफली खा पाता हूँ बेटा. बट you don't expect an applause after you've done a surgery, right? Like at the most people will say thank you, but they will not. In India it is the least like word which is used कि good job. Nobody says good job. अगर अच्छा करते तो हाँ ठीक है, इसका तो फर्ज है. कितने पैसे? तुम्हारा काम ही है. कितने पैसे हुए भैया? That was. Nobody says good job, man. ऐसा कुछ नहीं. Anything you are scared of? कभी किसी चीज से डर लगा हो? अभी हम जा रहे हैं ऊपर हार्बर ब्रिज चढ़ने, तो अच्छा. थोड़ी गौरव की मनीष जी को सब पता है मेरे. कहते जानी जान ब्रह्म ज्ञानी. है. not like that, but and I'm sure. But on a serious note, anything you are ever scared of? किसी चीज से कभी लगा हो, अरे यार. You know what I'm so like I keep saying that I was a commander of the Navy and I started stand-up comedy only 3.5 years back, and today being here itself is a, you know, like you said, then we don't need certificates, but today being here itself is a huge thing that probably I'm doing a good job, and that's why I'm here sitting in Sydney and you know we're doing this. अब कभी-कभी अचानक लगता है यार थोड़ा पहले शुरू करना था, टाइम कम है. You know what I mean to say? When you're 51, you already, you know, you're on the other side of the fence. Downhill. Yeah, you're downhill. No, it's not downhill. I think it's the second inning that I started. No, you don't encourage him. Like he has already eaten up everybody else's market. Okay. In terms of everything. Yeah, in terms of everything. Yeah, Like, right. in terms of girls, women, comedy gigs, like he is taking over everything. Like, don't encourage him, right? ये सब ऐसे Please ही है. discourage him. Right? no. Just tell him you are right. इनको वापस यूनिट भेजते हैं. Yes. महीप जी, on a serious note, जिंदगी में कभी किसी चीज से I am scared of pin drop silence after my jokes. If nobody laughs, that scares me. Actually, I have had nightmares about this, that I am performing in front of 10,000 people and nobody is laughing. So that scares me a lot. Like this is something I'll be really scared of. मैं निडर हो चुका हूँ, मेरी शादी हो चुकी है. I've seen it all. तो ये सब उन बीवियों के नाम है. आप लोगों को निडर बनाते हैं. हाँ, Hats off to you. बहादुर बना. All the wives, बहादुर बनाते हैं. all the caring Indian wives to you. Like anything on your wish list? ये अभी बाकी टिक हो गया, अभी this is on my wish list ऐसे होना. Yeah, I want to travel the world, man.
travel the world? Absolutely, same. Yeah. Yeah, Like yeah. I want to travel the world Bas. with comedy, not like Yeah, yeah. not like a tourist, but So- like I'd love to go to different cities, different Yeah, countries, sure. and perform there. I'd Yeah, love yeah, to do travel that, and yeah. perform. Yeah. Travel and perform. Yeah, Lovely. Obviously. जी साहब. I would like to act also. अच्छा. Act also if मतलब मैं औकात अगर उतनी हुई या कभी कुछ मौका मिले तो I would Sure. like to act also. Absolutely. Like, obviously in a comedy way, but I would like to act also. Right. शक्ल ऐसी है वो हीरो वाला तो नहीं मिलेगा obviously वो मैं चाहता भी नहीं वो मुझे पता है but maybe as a comedian in films and all. चलो बॉम्बे वालों याद रखना. इसको One day. मत देना, देख लो इसको. Before we wrap up, क्योंकि जैसे जैसे स्टैंड अप कॉमेडी का दौर शुरू हुआ, there's a uphill journey that's going up. So there'll be a lot of, as you said, aspiring artists coming up to you. Any message for them? So my message to the aspiring artists is that everybody has to find his space, his voice, and his style, which people would relate to. Like my handle is Naughty Commander, which is my social media handle, and I do. You've seen my stuff also. So people relate to it. Have a different. So everybody will have to find his own style and identity which people can relate to. Otherwise, the audience today is very smart. They've been, you pay money. Like if you pay $100 to watch a show, you are aware of stand-up comedy, and anybody comes and they say, "Yaar, ye to uske jaisa hai, yaar." So what is the differentiator? So you need to be Exactly, different. yeah. You need to be original. You need to be yourself. And when you're on stage, just don't think कि तुम्हारे पहले कौन कर रहा था, बाद में कौन करेगा. It's your time. It's your show. You are the boss. Maheep ji, you want to add something on top? I'll agree mostly to this, and I want to say this to all the aspiring comedians, young or old, that your comedy will be decided on the basis of your life experiences, because stand-up comedy is telling the obvious truth, telling the true stories from your life. Yes, there are some hypothetical situations created in comedy and heightened up and created as a joke. But like I think that in stand-up comedy, your life experiences tell you what to say on stage, and more you are closer to your life experiences, more funnier you will be. And I think they should be totally true to themselves. They should tell whatever is true, and they'll find their voice. They'll find their voice eventually. Yes. Gupta ji? For me, it's like आजकल क्या है कि all those aspiring comedians, they're trying to be they are very fast. मतलब उनको लगता है कि मैं funny हूँ. They're not trying to give their time, and they don't have patience कि मैं थोड़ा time दूँ. अगर मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, वो उनको लगता नहीं मैं funny हूँ, क्यों नहीं है, मतलब ठीक है मैं shows करूँगा, मैं करता रहूँगा, मतलब it's like बिग बाज़ार चल रहा है ऐसे कॉमेडी का. ऐसा नहीं है, तो फिर उनको थोड़ा पेशेंस रखना है. और अगर उनका कॉल नहीं, बेसिकली स्टैंड अप में इसलिए नहीं आए कि आजकल स्टैंड अप का बूम है. अगर वो फ़नी है तो स्टैंड अप में आए, क्योंकि अगर आप उस इंटेंशन से आओगे कि यार आजकल स्टैंड अप में मैं भी थोड़ा बहुत हंसाता हूँ एक बार, क्योंकि आई हैव मेट मेनी पीपल. मैं एक कॉर्पोरेट शो कर रहा था, उसका ऑर्गेनाइजर बोलता सर वैसे थोड़ा बहुत तो मैं भी मजाक कर लेता हूँ आजकल दोस्तों में, तो मैं भी घुस जाऊँ कि काफ़ी बूम चल रहा है. उसको लग रहा है पता नहीं कोई जैसे सिलिकॉन वैली का बूम आया था वैसे इतने सारे इंजीनियर सिक्योरिटी होते गाजियाबाद के, सबका हो रहा था. तो यार तो बहती गंगा में मैं भी, तो मैंने कहा इस तरह से नहीं होता. तो इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ फनी और आपको लगता है, तो उसके बाद भी आपको यू नीड लाइक रिव्यू फ्रॉम द ऑडियंस ऑल्सो. You need to get on stage at least 5 times, 10 times to feel if you are funny. If you are killing it like 8 times out of 10, you can consider yourself funny. तो अगर तुम 10 में से 2 बार करोगे, यार 8 बार तो यार मेरी किस्मत ख़राब थी, या ऑडियंस बेकार था, या उस दिन मेरा पेट ख़राब था, या मम्मी ने डांट दिया था इसलिए को नहीं पाया, गर्मी बहुत है आजकल, ये है वो जो भी है. तो बेसिकली ये आपको आपकी अपनी कॉलिंग देखनी है कि अगर आप कॉमेडियन ही बनना चाहते हो तो आप उसमें बूम अपने आप उस फील्ड में आ जाएगा जिसमें अच्छा टैलेंट आएगा. स्टैंड अप का बूम अभी आया क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ गुड टैलेंट विच इज़ कमिंग, एंड इट इज़ केटरिंग अ न्यू थिंग टू द ऑडियंस. लोग कपिल शर्मा देख रहे थे अभी तक, उनको एक नया फ्लेवर मिला है जिसमें कोई नाच के नहीं आ रहा, कोई देयर इज नो क्रॉस ड्रेसर, कोई दादी उछलती भी नहीं आ रही. अ पर्सन नॉर्मली लिटरली स्टैंडिंग एंड टेलिंग हिज स्टोरीज एंड मेकिंग एवरीवन्स लाफ विदाउट एनी प्रॉप्स और एनी क्रॉस ड्रेसिंग एंड मेकअप, कुछ भी ऐसा No exaggeration. तो ये थे ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, मनीष त्यागी, महीप सिंह, गौरव गुप्ता. इन तीनों के साथ की मैंने थोड़ी सी बातचीत, और मैं आप सबका नवनीत. एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ मैं रास मीडिया के गुरुदत्त शेनॉय,
एंड विजय गुंबर जी का, जिनकी वजह से बैठने का मौका मिला, और रीना जेठी जी ऑफ कुबेर वॉल्ट्स. Look at the set. But So thank you so much. They've got 4.5 tons of glass there. Lovely meeting you. sir. Lovely meeting you. Thank you so Lovely very much. meeting you. Thank you. Good to see you. Thank you. Thank you. Dream big, achieve big. Gemco Sydney. Any course, any uni. www.gemcoaustralia.com.